Hello student, I welcome all my student in this channel to learn English grammar. Student, myself, your English teacher Pradeep sir, teaching you English grammar. In this channel, in this English grammar class, we will learn today parts of speech. Okay student, parts of speech. So without wasting time, let us begin our class. Parts of speech. Parts of speech is the basic category of words according to their function in a sentence. It is a category to which a word is assigned in accordance with its synthetic functions. In English grammar, English has 8 main part of speech: name, noun, pronoun, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction and interjection. So my dear student, these 8 main part of speech we will learn in detail as we are learning the parts of speech in our English grammar lessons. Okay student, so let me describe more about parts of speech. The part of speech are commonly divided into 2 categories. One is open classes, second is closed classes. In open classes, noun, verb, adjective and adverb, these 4 parts of speech are there. And in closed classes, pronouns, preposition, conjunction and interjection. Okay student, so let me describe today about all these parts of speech together. Student, listen carefully and learn it. It is very interesting. And in my next classes, I will explain in detail each part of speech. So today, let us learn all these part of speech together, its meaning and with its examples. Okay student, so the first one is noun. N-O-U-N, noun. Okay student, so here you can see noun. Noun means it is the name of a person, place or things. Okay, this part of speech is a name, the naming words. It can be a name of a person, place, things or many more. I will explain in detail when I am going to describe all these parts of speech. So today you learn this that noun is the name of a person, place or a thing. Example student here: Roma, boat, India, Bhima. Okay, Roma, Bhima, these are the name of persons. So student, boat is the name of a thing, India is name of a place, country. तो स्टूडेंट आज आम इंग्लिश ग्रामर रो पार्ट ऑफ स्पीच को आम शिखुछु. विशेषकर पार्ट ऑफ स्पीच 8 भाग रे विभक्त करा जायछि. सेगुडा कहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. सो स्टूडेंट एठी आमे देखोछु स्पेशली पार्ट ऑफ स्पीच तार मीनिंग आउ तार फंक्शन पुणी तार उदाहरण सहित. आज मु जस्ट पार्ट ऑफ स्पीच रो इंट्रोडक्शन करूँगी. आमर नेक्स्ट क्लास गुड़ाक
मु गोटे गोटे पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेलली मु एक्सप्लेन करी. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट आम देखु नाउन. नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन रो अर्थ है कौन सी व्यक्ति बा कौन सी स्थान, कौन सी जिनिस बा जेकोसी नाम. बुझे स्टूडेंट, नाउन माने नाम. नाम बोली मन रखि थे. ये आम एग्जांपल देखु रोमा, बोट, इंडिया, भीमा. ओके, रोमा भीमा एटा व्यक्तिर नाम. आउ इंडिया गोटे स्थान बा गोटे देशर नाम. बोट गोटे जिनिसर नाम. ठीक है स्टूडेंट. सो द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. प्रोनाउन means it takes the place of a noun. Okay student, example I, you, he, she, it, ours, them, who, etc. pronoun रो अर्थ है स्टूडेंट एरा नाम बदल रे, नाउन बदल रे जो शब्द को आम यूज करूँ ताहा होची प्रोनाउन. ओके, ये देख आई, यू, ही, सी. एग्जाम्पल आम कहवा रोमा इज इटिंग. ओके, रोमा इज इटिंग, EATING, इटिंग. ओके, आम रोमा बदल रे स्टूडेंट सी इज इटिंग आम लिखिपर सी इज इटिंग. ओके, देन भीमा इज राइटिंग आम भीमा बदल रे ही लिखिपर ही इज राइटिंग. ओके स्टूडेंट, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. यही वर्ड गुड़ी को आम प्रोनाउन बोली कहू. ठीक अच्छे स्टूडेंट. देन द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज verbs. Verbs, it identify an action or state of being. Okay, or simply we say verbs are action words. Okay, example believe, seem, finish, eat, drink. तो verb माने स्टूडेंट एडा होची गोटे एक्शन वर्ड, काम जहाँकि क्रिया काम देखाए. जमती कि फिनिश, इट, ड्रिंक, खाओ पिओ, ये सब कौन गोटे गोटे एक्शन. सो यहाँ को आम वर्ब कही था. द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स इट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ओके, एग्जाम्पल लेजी, often, only, hopefully, softly, lazily. Okay, so it modifies a verb or adjective or another adverb. माने adverb टा verb को बा adjective को modify करे, ताको माने ता विषय से देखाए. example he works daily, he works, he lazily work. ओके, से वर्ब को से देखो अच्छी, वर्ब विषय से कहू अच्छी बा मॉडिफाई करू अच्छी, से आमे यहाँ को एडवर्ब कही था. ओके स्टूडेंट. देन एडजेक्टिव, it modifies a noun. Example funny, unique, bright, beautiful, healthy. This is a girl. Girl is a noun. This is a beautiful girl. What type of girl? Beautiful girl. Okay, so beautiful is a adjective. Okay student, तो adjective कौन करे, noun को modify करे, noun रो विषय रे कहे. तो से जड़े झील, सी इज ए गर्ल, तो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल जो आम कहू से नाउन को से डिस्क्राइब करूँगी, नाउन को से मॉडिफाई करूँगी, नाउन विषय से कहूँ से एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव. ओके, देन अनदर पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज preposition. Preposition, it shows a relation between a noun
or a pronoun and with other words in a sentence. Okay, example: close to, out of, apart from, in, on, at, of. Okay, uh, this book is on the table, or the boy is sleeping, or let me take another example. uh, Pen is on the desk, the on. Okay, so apples are in a, apples are kept in a plate, in. Okay, then so these words are showing a relation between the noun. Okay, book is on the table. Okay, so book, it is a noun, and showing the other words, that is table. So on. Okay, so it is preposition. So let me describe you in our preposition class. Many more prepositions are there, you will enjoy that class. Okay student, then conjunction, it joins words, phrase and clauses. But simply we say conjunction is a joining word. Example: and, but, or, many more. Okay, many more are there. Conjunction mane just joining words. Okay, and, but, or. Okay, example: Hari and Shyam are cousins. Okay, एठी हम देखुछु हरी एंड कजिन को से जॉइन करू अछि. ओके, I am thirsty but I am not drinking juice. Okay, I am thirsty and I am not drinking juice. So the conjunction is here but term को एठी यूज करा जाऊ अछि. Then the last parts of speech is interjection. It express emotion, sudden feelings. Example: oops, ouch. Okay, so student एटा गोटे फीलिंग जो कि आमे निजर इमोशन को आमे एक्सप्रेस करू यही वर्ड, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच दे करू. ओके स्टूडेंट, so student, today you have learned these all 8 part of speech, means in brief: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So student, do not forget these part of speech. तो स्टूडेंट या माने मने रखिबे, यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा मन रखिदेवे और मीनिंग को मध्य मन रखिदेवे. पुणी एग्जाम्पल मध्य निजे क्रिएट करिकी नोट बनै पारिबे. ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वाचिंग today's first lesson, that is parts of speech, and we will learn in detail all these part of speech in our next class. So take care student, see you, bye.